Hello everyone, good evening. Welcome back to Sci Study Classes. Hope you all guys are doing well and excited for the session today. आशा करुचे समस्ते बहुत ही भलरे थिबो, प्रिपरेशन भी बहुत ही भल भाबरे चली थिबो. आउ एग्जाम भी बहुत नियरेस्ट हो गलानी तुम मानकर. सो एबे तुमर लेबर हार्डवर्क सबू को तुम्हें ध्यान आखि आगे रखिकी ध्यान रे रखिकी तुम प्रिपरेशन निजर स्टार्ट कर दियो. कारण जी दिन पाखे आसूची सेतिकी तुम टाइम कमी कमी जाऊँगी. आगुरी बहुत टाइम थिला कारण जानुआरी पाखरु तुम मैंने जदि भी प्रिपरेशन करुच ऑलरेडी 6 मास 4 मास हो गला 5 मास पूरा कंप्लीट हो गला हो 30 को 31 रे 31 रे 5 मास कंप्लीट हो. सो तुम निजर इवैल्यूएशन तुम्हें निजे कर जे तुम्हें केतिकी कंप्लीट करिच. तुम जो सिलेबस अच्छे सिलेबस को तुम्हें केतिकी कंप्लीट करिच केते पोर्शन तुम्हें करि परिबो. देखो जरूरी नहीं कि तुम्हें 90% रिजल्ट ही देकी आसीबो. ओके जरूरी नहीं 100 रु 100 क्वेश्चन 100 रु तुम्हें 40टा क्वेश्चन भी जदि देल 100 रु बाकी 60टा को स्किप कल और 40टा क्वेश्चन देल जरूरी अच्छी जे से 40टा क्वेश्चन शुड बी राइट. ओके 40टा जाक क्वेश्चन ठीक हवा दरकार. एमती ना कि 40टा मते मते एक्यूरेसी मेंटेन करिवार थिला. सो मु नेगेटिव मार्किंग डर रे मु 40टा क्वेश्चन कर दे के आसी. तो 40टा क्वेश्चन कर दे के आसी माने 40टा जाक मोर भूल 40टा रु 20टा भूल जा बाकी तो सेमती करिवार नाही. जदि 20टा आसुची परफेक्ट 20टा ही अटेंड करिके आस. जदि 30टा आसुची 30टा को जितेटा आसूची तार परफेक्ट आंसर दियो ठीक आंसर दियो. एमती ना कि सब आड़ू भूल भाल जो गेस करी करी आंसर आम दियंती गेस करी करी आंसर दबार नहीं. तो भल से जीवा पूर्वर प्रिपरेशन रिविजन जहाँ जो टॉपिक निज निज विषय रे भल से रिविजन करके जाओ भल से पढ़ी जाओ जमती एग्जाम तुम मानकर निहाती क्लीयर हम. ओके सो एतिकी थिला जिनस. देन आउ गोटे जिनस कहबी जो मैंने एपर्यंत चैनल नुआ अच्छा चैनल को निहाती भाव में सब्सक्राइब करदे और नुआ नुआ नोटिफिकेशन तुम मान पाखे खूब शीघ्र पहुँची पार. तो आसंता काली सॉरी आज हूँ तुम मानकर मु बैच 3 करेबी कौन ना 2018 आउ 19 बैच 3 रो क्वेश्चन हम. सो बैच 3 रो सरला आम आसंता काली को बैच 4 रो क्वेश्चन बैच 2 बैच 1 रो जोड़ा जोड़ा स्किप हो गुड़ाक करदेवी. ओके देन जीवा क्वेश्चन ऊपर को. सो देखिबा एटा कोथिरो क्वेश्चन ना 16 अगस्त 2018 बैच 3 रो क्वेश्चन अच्छे कौन ना fill in the blank with an appropriate option. ओके गोटे appropriate option गोटे करेक्ट ऑप्शन देकी हमको ब्लैंक फिल करिया को पड़िबो. तो कौन रहिबो क्वेश्चन कौन रहउची हमरो ना अ कन्वर्सेशन व्हिच इज अम्यूजिंग एंड नॉट सीरियस. ओके गोटे कन्वर्सेशन जोटा कि अम्यूजिंग but not serious. It is called dash or is e or an दीजिए माने e joyless hectic ना an immoderate ना a banter. तो कौन हम तो मुझे कहीदे जे गोटे कन्वर्सेशन माने वार्तालाप जोटा कि गोटे मजालिया कथा तुम क्या सहित होटा सीरीयस नुह. ओके गोटे मजालिया कथा हो. इट इज कौन माने इटा कौन इटा जॉयलेस माने कौन जॉय अर्थ होची एंजॉय करिबा खुशी मनाइबा मजालिया टाइम स्पेंड करिबा मजालिया कथा कहबा. तो जॉयलेस माने सीरियस मोमेंट किंतु से क्वेश्चन कौन देची जे कन्वर्सेशनटा जोटा तुमर गोटे ये कन्वर्सेशन होइतिबो जोटा कि तुम्हें भलरे एंजॉय करुथबो मोमेंटा को एंजॉय करुथबो गोटे जॉयफुल सिचुएशन को से कही. तो जॉयलेस हेनी. तो ऑप्शन नंबर ए हूँ इनकरेक्ट. देन हेक्टिक माने बहुत विरक्तिकर जो जिनसटा बहुत अस्वस्तिकर बा विरक्तिकर. तो हेक्टिक भी हेनी. इमोडरेट माने कौन जोटार गोटे किसी ये न थाए माने कौन गोटे स्थायित्व न थाए से टाइप आम कहीपर से अर्थ भी कहीपर. देन आसूची कौन बैंटर माने हूँ कौन ना गोटे कॉमेडी बा मजालिया गप थट्टा परिहास ये टाइप जो कथबार्ता कन्वर्सेशन को आम बैंटर बोली कहबा. तो करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर डी. देन जीवा direction दीजिए कौन ना direction for questions number 2 to number 6. read the passage below and
answer the question that follow. Okay, number 2 to number question को read करो और answer following question wise answer रखो. The Maharaja's minions, okay, as the word suggests, were subservient and sycophantic. In order to keep him in good humor, they fell in his plan to kill the tigers. Not even his diwan, who should have his advisor, dared to go against his wishes, but aided his marriage to a princess whose father's kingdom boasted of a tiger population. When the 100th tiger could not be found, the king's diwan went to the extent of planting a caged tiger in a strategic place for the king to find and shoot. When the king missed his mark, the minions saw to it that the tiger was shot and buried. No one of them wanted to incur his worth by revealing the truth or by acting in contradiction to his wishes. Even the shopkeeper who sold the king the toy tiger quoted a higher price lest he be punished under the rules of the emergency. It is evident that the king's minions were driven by fear rather than feelings of sincerity towards their ruler. They were all aware that their jobs were at stake. This sort of behavior indeed finds a reflection in today's political order, where the greater good is sacrificed at the altar of selfish personal ambitions and gains. Okay, ମୁଁ ତ ପଢ଼ିଦେଲି. ତୁମେ ମାନେ କିଛି ଜଣ ବୁଝିପାରିଥିବ କିଛି ଜିନିଷ, କିଛି ଜଣ କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିବ. ଯେଉଁମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରିନ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ. ବାସ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହୋମୱାର୍କ ଦେଉଛି ଯେ ଏଠି ଏମିତି କିଛିଟା ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି. ଓକେ, ସେ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କର. ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ମିନିୟନ୍ସ, ଦେନ୍ ହେଉଛି ସବସର୍ଭିଏଣ୍ଟ, ସାଇକୋଫାଣ୍ଟିକ୍, ହ୍ୟୁମର, tigers, boasted, case, strategic, buried, contradiction, worth, revealing. ओके, तो ए पेज रे मु कहूची सिंसरिटी पाइल ना, ये हूँ सिंसरिटी, एम्बिशन, गेन्स, सैक्रिफाइड. तो एमती किसी आ गोटे रिफ्लेक्शन एमती जी वर्ड मु कहली से वर्ड गुड़े को तुम कौन कर ना निज खातार लेख. तापरे से वर्ड रो मीनिंग, तार सिनोनिम आउ तार एंटोनिम तुम टेलीग्राम रे मते फोटो पठाओ. टेलीग्राम रे फोटो पठाओ माने साई स्टडी क्लासेस रो ऑफिशियल चैनल रे फोटो पठाओ. ओके, मु देखिबी समस्तंकर आंसर. तो तापरे मु तुमको तुम जिते तार अर्थ फाइंड आउट कर ना, तुम तापर आउ थे पाराग्राफटा पढ़. तापर भी जदि न बुझीपार ताले मु नेक्स्ट क्लास रे तुमको पाराग्राफ बुझेबी. कारण मु सब बेले पाराग्राफ बुझौची, किंतु पाराग्राफ आमे बुझेबा माने तुम मानक पाखरु किछिटा तुम मानकर चिंतन करवा जो शक्ति तुम मैंने भाबा शक्ति रे मु हस्तक्षेप करुच्ची, मु सेठी बर्डन साजुची. तुमको भी किछिटा जिनस टैक्स आकार रे दिया गले, तुमको किछि जिनस भाबिबा को दिया गले, सेटा तुमरो इम्प्रूवमेंट हम. सो या उपरे भाबो ई पैराग्राफ रो मीनिंग कोन, तापरे तार ए जो सिनोनिम एंटोनिम देली मते जो माने सीरियस स्टूडेंट मते से माने टेलीग्राम रे तुमरो आंसर पठेबो. देन क्वेश्चन नंबर 2 देखिबा. व्हाट डिड द किंग्स मिनियन what did the king's minions fear if they went against his wishes? Okay, question number 2. What did the king's minion fears? Okay,
राजांकर मिनियंस माने कौन पाई डरुथिले फियर माने कौन भयभीत हवा इफ दे वेंट टू अगेंस्ट हिज विशेस माने राजा को विरोध रे जीवा पई तांको मिनियंस माने काहे के फियर करुथिले लॉस्टिंग देयर जॉब्स बीइंग रिडिक्यूल्ड बीइंग reprimanded earning the king's displeasure सो कहीं डरुले कारण जॉब रु बाहरी जीवा भय थिला बा लूजिंग देयर जॉब्स रो भय थिला व्हाट डिड द दीवान डू टू कीप हिम गुड ह्यूमर ओके दीवान कौन करते टू कीप हिम इन गुड ह्यूमर एडेड हिज मैरिज टू अ प्रिंसेस फाउंड द tigers opposed his plans praised the king क्वेश्चन नंबर 3 सठिक आंसर कौन हम अडेड दीवान कौन चाहूले दीवान चाहूले मैरिज करने को प्रिंसेस को सो एडेड हिज मैरिज टू अ प्रिंसेस एड कले गोटे प्रिंसेस को मैरिज करने एड तैयारी कले व्हाट वाज द पर्पज ऑफ फाइंडिंग 100 टिगर फर्स्ट तो तुम मान आम है टिगर माने कौन तुम्हें मैंने निजे सर्च कर मु कहबी कारण मु कहला माने तुम्हें हल्का हो ओके टिगर रो मीनिंग तुम्हें निजे सर्च कर क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन होची टू बी शॉट बाय द किंग क्वेश्चन नंबर 5 देची व्हाट हैव द किंग्स मिनियन बीन डिस्क्राइब्ड एज ओके ऑप्शन ए इम्बेसाइल्स फ्लैटर्स एडवाइजर कावर्ड्स ओके क्वेश्चन नंबर 5 रो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी फ्लैटर्स ओके देन जीवा क्वेश्चन नंबर 6 व्हाई वाज द टिगर शूट एंड बुरीड बाय द मिनियंस ओके टिगर को कहीं के शूट करा जाइथिला आउ पोती दिया जाइथिला बुरीड माने कोन जण को हम जतले पोती दियते ताको हम बुरीड बोली कहंती दिस वाज रिक्वायर्ड अंडर द रूल्स ऑफ द इमरजेंसी दे डिडंट वांट टू रिवील द ट्रूथ दे डिडंट वांट टू गेन द किंग्स फेवर they wanted to show their marks so question number 6 कौन कहूँ तो मैंने बुझी पार why was the tiger shot and buried by the minions okay तो कहीं की है थिले ऑप्शन नंबर ए बी सी डी चार्टे जाक ऑप्शन भितर करेक्ट ऑप्शन हम ऑप्शन नंबर बी दे डिडंट वांट टू रिवील द ट्रुथ इवेन ए जो ऑप्शन गुड़ाक मु कहूँ से लाइन गुड़ाक पैराग्राफ रे अच्छी तमें जितेबाला कम टाइम अच्छी मो पाखे मु अधिक लेंथी करें वीडियो को कारण दुईटा इयर तुम पाखे प्रैक्टिस करार अच्छी तो तुम्हें मैंने जिते क्लास सरी तुम मैंने निजे चेक करके कौन कर आउ थे प्रैक्टिस कर ओके देन जी आम कौन क्वेश्चन नंबर 7 फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन आफ्टर द बॉम्ब एक्सप्लोजन इन ए स्ट्रेंजर दैट वर्कड इनटू द सिटी was taken into dash okay after the bomb explosion haba mane kono विस्फोरण haba any stranger that walked into the city was taken into dash newspaper custody eyewitness territory okay से कौन कहूची आफ्टर द बॉम्ब एक्सप्लोजन बॉम्ब जिते एक्सप्लोज है एनी स्ट्रेंजर दैट वर्कड इनटू द सिटी वाज टेकन इनटू एनी स्ट्रेंजर जड़े स्ट्रेंजर जी अचिन्हा लोक जड़े सिटी भितर को जाऊे से टाइम रे सिटी भितर को कौन वर्क करुले एंटर करते सिटी भितर को was taken into newspaper हम कि न्यूज़पेपर को नहीं किसी काम नहीं कस्टडी तांको सन्देह करागला तेणु ताको कस्टडी को निगला तो कस्टडी माने कौन आम क्या कस्टडी को नियंती जहाँ उपर सन्देह हुए ताहले कस्टडी माने कौन तुम से नेट रु सर्च कर ओके देन आम जा क्वेश्चन नंबर 8 को क्वेश्चन नंबर 8 कौन कहूँ क्वेश्चन नंबर 8 कौन कहूँ फिल इन द ब्लैंक सेम जिनस कहूँ आई एम सॉरी I cannot come into work today. I am feeling dash. I have a sore throat and runny nose. Okay? I am sorry. मते क्षमा करिबो. I cannot come into work today. मो काम को आज आसी परिबी नहीं. I am feeling dash. Over the moon. Insult to injury. Under the weather. Glad to see. Okay? Question number 8. The से कौन कहे आई एम फिलिंग वेरी डैश तो जिते बड़े तुम्हें नेक्स्ट पाराटा पढ़ुची नेक्स्ट सेंटेंसटा पढ़ुची आई हैव अ सोर थॉट
एंड रनी नोज मोर गोटे सोर थ्रोट माने मो गला बसी जाइए और रनी नोज सो मो आसीपारिनी ओके कॉलेज आसीपारिनी बा काम को आसीपारिनी सो जितेबाला तुम्हें अनहेल्दी अनवेल फिल करुच बा अनहेल्दी फिल करुच तुम हेल्दी फिल करून तुम देहरे किसी प्रॉब्लम अच्छी तुम हेल्थ रे किसी प्रॉब्लम अच्छी तुम वीक फिल करुच तुम डाउन फिल करुच से तुम कौन कौन फ्रेजल वर्ब यूज कर आई एम अंडर द वेदर आई एम अंडर द वेदर तापर तुम मान होमवर्क है ओवर द मून इनसल्ट टू इंजुरी एंड ग्लैड टू सी ये तीन टा सारा आम कौ जगह यूज करवा ओके देन जी क्वेश्चन नंबर 9 fill in the blanks with an appropriate option same question our teacher doesn't dash us to use mobile phone in class भितरे आम टीचर आमको कौन करती doesn't make us to use mobile phone doesn't write us doesn't let us doesn't forbid us so let us माने let अर्थ है allow okay so our teacher doesn't let us to use mobile phones in class then jiba question number 10 कौन कहूची fill in the blanks with appropriate form तो से भी से सेम जिनस you cannot smoke here तुम ये स्मोक करि परिबो नहीं please dash your cigarette please put down your cigarette please put out your cigarette please put away your cigarette please put up your cigarette कौन हम ऑप्शन नंबर ए बी सी डी सो प्लीज पुट आउट ताको बाहर रखी दियो तमें ये भितर स्मोक करि परिबो नहीं ए जगह स्मोक करि परिबो नहीं तेणु तमें ताको सियाड़े रखी दियो ओके जानी हला पुट आउट हबो करेक्ट ऑप्शन तो एबे आमे करिबा कोन आउ गोटे सेशन स्टार्ट करिबा बा आउ गोटे नुआ हमर PYQ सेशन को आमे जिबा कौन ना 10 जून 2019 रो बैच 3 सेशन को आमे स्टार्ट करिबा चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिमिलर मीनिंग वर्ड ऑफ रेकलेस रो मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड कौन कॉटियस टिमिड रेस्पॉन्सिबल ना फुल हेडी सो रेकलेस बा जहार अर्थ होची माने तमे कहि परिबो कोन जी सीरियस नुह माने कौन सी जिनस लापरवाह करवा माने ओडिया रे कौन कहते सेटा मत टिके रुहम तुमको बुझेबा को मते प्रॉब्लम होची ओडिया मीनिंग टे तार रेकलेस माने जोटे केयरलेस ओके केयरलेस सेटा हला कोन रेकलेस जोटा माने बेजत्न भाबरे चिंता अर्थ जहार नथिबो सेटा तो तार सिमिलर वर्ड हबो फुल हेडी select the right form of verb in the given option okay question number 2 कहिछि right verb form को यूज करो बा सिलेक्ट करो I dash in a class I dash in a first class hotel and it is too expensive for me I dash I am staying in a first class hotel now I stayed in a first class hotel I will be staying in a first class hotel now I am going to stay in a first class hotel and it is too expensive for me so the correct option is option number A I am staying in a first class hotel and it is too expensive for me then question number 3 रो 7 कोन अछि पैसेज अछि सो पैसेज टी को हम रीड करिबा देन हम तार क्वेश्चन आंसर करिबा a silent film is a film with no synchronized recorded sound and in particular no audible dialogue okay silent film होची सही फिल्म जोटी कोन से वॉइस सिंक्रोनाइज्ड होएरी जोटी कोन से साउंड आसेनी सेठी खाली तुम विजुअल सेठी ऑडियो न थाए सेटा केवल विजुअल सेटा केवल तुम देखि परिबो कि सेठी ऑडियो नथिबो राइट किछि ऑडिबल डायलॉग्स नथिबो देयर यू विल बी और देयर ओनली यू विल बी सी द total movie or total film. In silent films, for entertainment, the plot may be conveyed by the use of title cards, written indication of the plot and key dialogue lines. The idea of combining motion pictures with recorded sound is nearly as old as film itself. But because of the technical challenges involved
हाँ ठीक अच्छे तो but because of the technical challenge involved, the introduction of synchronized dialogue became practical only in the late 1920s with the perfection of the audio amplifier tube and the advent of the Vitaphone system. During the silent film era that excited from the mid 1890s to the late 1920s. A pianist, theatre organist, or even in large cities, a small orchestra would often play music to accompany the film's pianist and organist would play either from the sheet music or improvisation. The term silent is a retronomy, okay, a term created to retroactively distinguish something. Early sound films, starting with the jazz singer in 1927, were variously referred to as the talkie sound films or talking picture. Within a decade, the widespread production of silent films for popular entertainment has ceased and the industry had moved fully into the sound era, in which movies were accompanied by synchronized sound recordings of spoken dialogue, music, and sound effect. Most early motion pictures are considered lost because the nitrate film used in that era was extremely unstable and flammable. Okay, पूरा पाराटा तो पढ़ीदेली पूरा टोटाल पैसेजटा को पढ़ीदेली किंतु पूर्व पारे जमती तुमको कही तुम्हें पैसेजटा को निजे पढ़ डिफिकल्ट वर्ड रो सिनोनिम आउ एंटोनिम मते टेलीग्राम रे लिखिकी देखिब. ओके आमे जिबा क्वेश्चन आंसर सेशन को. Synchronized dialogues become a part practical in film during the dash. माने synchronized dialogue को टाइम रे थिला 1890s 1890s sorry late 1890s mid 1890s ना mid 1920s ना late 1920s. सो जोदी कहिबा आमे synchronized dialogue कथा ताले सेटा थिला हमर कोन late 1920s. Okay, option number D. Talkies are dash sound films, sound effect, spoken dialogue, retronym. So talkies are कौन? Option number A. Sound films. Number 5 को जिबा. The plot in silent movies can be conveyed through dash. The plot in silent movies can be conveyed through dash. Question number 5. Number B. Key dialogue lines. Question number 6. During the silent film era, a small orchestra समझते जानी छो. So से कहे during the silent film era time रे a small orchestra in a large cities would often play music to entertain the audience, to convey the plot to the audience, to promote the silent film, to accompany the films. Question number 6 रो correct answer होगा to accompany the films. Okay. Most early motion pictures were lost because option number A, the narrative film used those days were extremely flammable. The projection was made using lantern. The widespread production of silent film had ceased. They didn't have synchronized dialogue. Option number A, B, C, D. Question number 7 रो correct option होगा option number A. तापरे जिबा क्वेश्चन नंबर 8. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिमिलर मीनिंग वर्ड डिस्टेंस. डिस्टेंस रो रिजर्व्ड, फ्रेंडली, रिमूव्ड ना फार. तो एटा तो तुम्हें माने ही करवा कथा. बहुत इजी क्वेश्चन. डिस्टेंस रो हबो कोन फार. क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 देजी. देयर आर 5 डैश इन माय यार्ड. मो बगीचा रे मो यार्ड रे 5 कोन डियर्स अछंती ना डियर्स अछंती
ना डियर्स अच्छी ना डियर अच्छा ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ही इज डैश यूरोपियन हु लव सिकिंग में भी एटा स्किंग लिखाई सो एन हम ना ए हम ना नो आर्टिकल हम सो क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर कौन हम आन यूरोपियन ए यूरोपियन द यूरोपियन ना नो आर्टिकल ये आंसरटा भी तुम्हें मैंने मत करी कारण एतिकी इजी इजी क्वेश्चन अच्छी ना तुम्हें मैंने ये आंसर निजे ही करवा कथा किंतु जेहेतु आम रूल रेगुलेशन अनुसार किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम सहित डिस्कस करार था तो मुझे करदे तुम मानकर मेन दायित्व है तुम्हें आपको कौन कर प्रैक्टिस करके मत आंसर पठेब ओके टेलीग्राम रे सो आज तो समय हो जाती आमर टोटाल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20टा क्वेश्चन टोटाल आम डिस्कस कले 2टा ईयर तो आसंता काली पुणी आम 2टा नुआ सेशन को स्टार्ट करवा आज विदाय नौ जो मैंने पेसेंस सहित क्लास टी को एंजॉय कर बहुत बहुत धन्यवाद हैव अ गुड डे।